بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, respected parents and my dear students. How are you? I hope you all are doing good. Students, this is your science class. Let's start our studies. Okay, my dear students, all of you open page 23. Page 23, okay? Hurry up, very good. All of you open page 23. Okay students, now there are some activities on page 23 and we cannot do activity 1 because we are not in the classroom right now, but inshallah when we will join our school's bag, then we will do this activity which is related to the classroom. And today we are going to do exercise 2, which states that make a list of 3 types of food that you like. Okay, आपने 3 types of food की लिस्ट बनानी है जो कि आपको पसंद है खाने में. ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ देम इन द बॉक्सेस बिलो. आपको जो जो भी पसंद है आप उसकी पिक्चर बना सकते हैं. यू कैन ऑल्सो कट आउट पिक्चर्स ऑफ फूड्स you like and paste them in a scrapbook or on a poster. And if you have the picture of your favorite food, you can also cut them and you can paste them in your scrapbooks or on a poster. Okay, but you have to take help of your parents. But today we are going to draw them over here. I am going to draw some of my favorite food items. और इसी तरह आप लोगों ने भी आपको जो भी फूड आइटम पसंद है, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, आइसक्रीम्स हैं, चॉकलेट्स, केक्स, whatever. Okay, but you have to draw hygienic food because we have studied that junk food is not good for your health. So we have to draw food items which are related to animals and plants. So I have drawn an apple over here. You can see this is an apple. I have drawn over here and I have not giving it color. You can give it color, okay? You can give it red color. This is a red apple. This is a red apple. And this is an egg. I have drawn an egg because I like egg. Okay students? Very good. And what is this? This is, I have drawn a milk. This is milk, a glass of milk. So these are the food items which I like. ठीक है, मुझे ये खाने में पसंद है. I eat apple, I eat egg and I drink milk. इसी तरह आपको जो भी खाने में पसंद है आप उनकी 3 पिक्चर्स यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है, प्यारी प्यारी सी, and give them very neat and clean colors. Okay my dear students, very good. Okay students, so this was the work on page 23. Now hurry up, all of you open page 24. Okay students, this is page 24 and it's very easy because we have learned in the previous video classes that how many body parts do we have, and we all know the names of all of the body parts, right students? So it's your homework. You have to write the names of all these body parts. Okay, this is ear, neck, arm, eye, nose, hand, thigh, feet. Okay, ये तो आपको आते हैं, आपने इसको लर्न भी किए हैं. सो दिस इज़ योर होमवर्क. आप इसको खुद लिखेंगे. ओके डियर स्टूडेंट्स, this is your homework. Page 24 is your homework. You have to label the diagram below with the names of the body parts. You have to label the names of all these body parts. This is your homework. Now let's move towards page 25. Hurry up. Okay students, now this is page 25 and let's see what we have on this page. Question 2 is,
color the pictures. We have to color all these pictures. आपने इनमें कलर करना है. Then draw a circle around the things which you can smell. जिस चीज़ को आप, जिस पिक्चर को आप देख के आपको लगता है कि आप उसको स्मेल कर सकते हैं, तो उसको आपने सर्कल करना है. Likewise I have done this for you. You can see we can smell noodles. जब हम नूडल्स या स्पैगेटीज खाते हैं, वी कैन स्मेल देम, हम उसको सूंघ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर नोज. सो आई हैव सर्कल इट. ओके, यू कैन सी आई हैव सर्कल इट. एंड वी कैन नॉट स्मेल अ बुक. हम बुक को स्मेल नहीं कर सकते, बट वी कैन स्मेल अ फ्लावर. हम रोज़ को स्मेल कर सकते हैं. सो आई हैव सर्कल इट. बट वी कैन नॉट सर्कल अ लैपटॉप. हम उसको नहीं कर सकते स्मेल, सो इसको हम सर्कल नहीं करेंगे. बट वी कैन स्मेल परफ्यूम. हम परफ्यूम्स को स्मेल कर सकते हैं. सो आई हैव मेड अ सर्कल अराउंड इट. बट वी कैन नॉट स्मेल अ बैग, इसलिए मैंने इसको सर्कल नहीं किया. वी कैन स्मेल नूडल्स, वी कैन स्मेल रोज, एंड वी कैन स्मेल परफ्यूम्स. ओके, वेरी गुड. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर ऑन क्वेश्चन 3. Draw the body part we use for each of the following senses. ठीक है, आपको ये नज़र आ रही है. वी हैव 5 सेंसेस. आपने बताना है कि कौन सा बॉडी पार्ट जो है इन सेंसेस के लिए यूज़ होता है. सीइंग, हम देखते किससे हैं? आई. स्मेलिंग, हम स्मेल किससे करते हैं? नोस. वेरी गुड. हम टच किससे करते हैं? hands. We use our hands for touching, and we use our ears for hearing. We use our tongue for tasting. Okay, you have to draw by yourself like this in a very neat and clean way. बिल्कुल भी आपने अपनी बुक को गंदा नहीं करना है. ठीक है, अच्छा अच्छा सा, प्यारा प्यारा सा बनाना है. and then you have to share the picture of all this work in your WhatsApp group. Okay my dear students, I hope you have enjoyed today's class, and your homework is you have to complete all this work and then share the picture of your homework in your WhatsApp group. Okay students, we'll meet you in the next video. Till then, stay home, stay safe my dear students. Take care. Allah Hafiz. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.